शुभोदय छात्रगण। आज इस अंतर में हम गद्य से नाडी टेल से संबंधी माने गद्य विधा से संबंधित शिक्षा नामक कहानी पाठ का पहला शीर्षक विषय के संबंधी विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ये वाला जो शिक्षा कहानी पाठ है, इसके कहानीकार यानी इसके लेखक मनमोहन भाटिया जी हैं। मनमोहन भाटिया जी का जीवन परिचय के संबंधी और उनके उद्देश्य के संबंधी पिछले अंतर में जो भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत इसका विश्लेषण किया गया। अब मनमोहन भाटिया जी शिक्षा नामक शीर्षक के संबंधी हमें किस प्रकार की प्रेरणा और इसके में मुख्य पात्रधार रविंद्र वो अपने लक्ष्य को कैसे लक्ष्य तक कैसे पहुंचता है, इससे क्या हमें नीति मिलती है, इस विषय के बारे में विश्लेषण किया है। और ये वाला विषय जो होता है वो भाग नंबर 3 से संबंधित है और इसके अंतर्गत मुख्य पात्रधार रविंद्र बताया गया। इस रविंद्र का जो जीवन काल अवधि है उन्हें इसके अंतर्गत इन्होंने एक लक्ष्य को बनाए रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्हें कई अपने जीवन के अंतर्गत कई कठिनाइयों की सामना किया और अंत में अपने लक्ष्य को ना छोड़कर वो कलेक्टर यानी आईएएस बन जाता है। यानी आईएएस के बनने में वो बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ा और यहाँ ये अपने माता पिता को भी संदर्भ के अनुसार क्या किया जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। बहुत दुखी होकर अपने माता पिता को छोड़कर अपने परिवार के अंतर्गत दूर होकर अपने पढ़ाई के लिए वो शहर गया और शहर में बहुत कठिनाई की सामना करके वो बड़े बड़े एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा का प्राप्त करना इसके लिए इसके स्तर के अनुसार एक गरीब परिवार वाला एक उच्च परिवार वालों के साथ रहकर उसके सामना करने में वो बहुत दुखी होता था। फिर भी अपने लक्ष्य को बनाए रखकर वो अंतिम में पढ़ाई पर लगन ध्यान देते हुए क्या होता है वो अपनी परीक्षा के अंतर्गत क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो जाता है। और सभी लोगों ने जो कलेक्टर के प्रशिक्षण अभ्यास होने पर प्रशिक्षण के लिए वो अच्छे बहुत संपन्न जिस जिलों को चुनौती किया, लेकिन इस रविंद्र ने अपने गांव का पिछड़े ज़िला ऐसे वाला ज़िले का इन्होंने चुनौती की। तब सरकार ने तुरंत इसकी मान्यता देते हुए क्या किया, तो उसी ज़िले का वो कलेक्टर बनाकर नियुक्ति कर देते हैं। अब वो उस कलेक्टर के रूप में उस गांव में पधारने लगता है तो सभी गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वो आते ही प्रथम रूप से अपने माता पिता का दर्शन करता है और गांव वालों के आशीर्वाद देता है और वचन देता है कि अवश्य मैं इस वाले ज़िले को और आपके जीवन को सुधार करूंगा और एक रूपांतर करूंगा, एक रूप आकार के अंतर्गत उन्नति प्रगति को और बढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो उसके गांव के अपने कलेक्टर के रूप में उन्हें गांव की उन्नति प्रगति के लिए पहला जो नियोजन करता है, मेन जो प्रोजेक्ट जो करता है वो अपने गांव के और शहर के बीच 8 मील की दूरी पर जो पुल था उस पुल का इसका क्या होता है नियोजन करता है। पहला पुल डलाने का कार्य करता है। उसके बाद उसके अंतर्गत अच्छी पढ़ाई की पाठशालाओं का और इस प्रकार एक चिकित्सालय और इस प्रकार उन लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाकर लोगों को आकर्षित करते हुए उन्हें प्रशंसा के लिए वो अपने गांव की उन्नति, अपने परिवार की उन्नति ही नहीं, अपने पूरे ज़िले की उन्नति के लिए वो विचार करता है।
और इस प्रकार जो व्यक्ति कठिनाई की सामना करता है तो अवश्य उसका जीवन सुखी बन जाता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर उसका जीवन सुखी आनंदी बन जाता है। जैसा कि रविंद्र ने अपने माता पिता को छोड़कर एक शहर गया और अपने लक्ष्य को IAS की परीक्षा उत्तीर्ण किया और उसी गांव के अंदर आया और उसके अंतर्गत उन्होंने अपना जीवन के अंतर्गत सुख का अनुभव परिवार के साथ समेत सुख का आनंद किया है। इस प्रकार just like today we are discussing one of the topic, that's the title is Shiksha, that means education. This education is one of the story topic. Those who write the story is called as a story writer. In this story is written by the Manmohan Bhatia. This part is now today we are discussing the part number 3rd of education, main title of Shiksha. In previous previous part we are discussed the first part about the author's biography, means when he born, what is his birthplace, and next how to here start the primary education, how to reach the complete his higher education as a advocate, and then next how to the services in Hindi literature, etc. And part number 2nd, what is the ambition of the author, as a story writer of Manmohan Bhatia, and who is the main character of this story, and next who is the person and what is his ambition and how to he reach the goal, like that, and etc. The message informations are discussed in part number 2nd. Now we are come to the point that part number 3rd. In this part we are discussing about the Ravindra. Those are main character of this story, and how to he complete his education, and what troubles he got the troubles got in his life period, and how to he get the goal and reach the goal, and how to his services to finally means he do the services to his native district, like this. Your first of all, your first sentence is introducing that एक कहानी पाठ है. What is the part of this lesson? This is the story part. This कहानी means story. What one is the story part, story lesson. This is the story lesson. इसका मुख्य पात्रधार, main character. So who is the main character of this story? Means Ravindra. Here, who is the Ravindra? Means Ravindra is one of the main character of this story, which story is was written by the Manmohan Bhatia. The title is Shiksha, that means education. Ravindra का नामक एक छोटा सा गरीब परिवार का बालक है. Is a poor family. Is one of the small younger boy, means is related in that village, in a native of a village. The बालक है. इससे बचपन से ही पढ़ाई पर अधिक ध्यान था. The boy, the Ravindra, was got the very interesting in education, in the studies from the primary stage, means childhood stage only. Here finally he got the thought IAS and examination. He decided his ambition in primary education only. What? As a IAS. Okay. And इसी लक्ष्य को as per his ambition. लक्ष्य means ambition. What is ambition? As a IAS, mean as a collector.
वह अपना ध्यान IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपनी प्रतिभा लगन के बल पर आगे बढ़ता था। मीन्स ही कॉन्सेंट्रेट is reach the goal as a IAS course. Mean he struggle and he concentrate is always he concentrate his ambition as IAS. How to get the IAS course as a group 1. अपनी प्रतिभा लगन, प्रतिभा means talent and लगन mean concentration. Okay, bal par with the base of his concentration and the talent, he continue his education. उसी समय रविंद्र के गांव में एक कारखाना means factory. What factory? That's a car factory. That कारखाना means factory is there. Means one of the कारखाना में here he stopped one of the is car factory. When all the people, the younger generation are get a job in that factory. But the parents of one Ravinder's parent also motivate or encourage to Ravinder to join that factory to earn the money, and as per your salary, and we can be that our family will be maintained easily. Okay, but he got the one of the strong and the ambition as a IAS. He reject to his parents' motivation, the suggestion, and he decided to, and he informed his parent, yes, I will continue my education. I got the goal as a IAS. I am not interested in this small job. So okay, but his parents are not accepted. So finally, they are decided to, if you are do the job, means can live here. If you are not job, means you are not interesting. So you are not obey my orders, means you can left away. Means leave the house. But he is feel very sad, and here is very bad feeling. But sometimes as per his parents, he do the job morning session and he continue that education in night time. But after some time, when he complete entrance of the IAS, he get the rank to join, eligible to IAS course. So he left the job, and finally he decided to leave the family members. Then he go to the city, and he joined the IAS course. And he continue that course, and he do concentrate and feel very the sadness, and he start the steps for the way of the town, town way. He go after reach the college. He reached the college, and he joined the campus of the IAS group. He continued that few days, and after completion his course, he got in this course time, he was getting good marks in every examination, and he finally complete his course within a time, and he selected as a collector. As then afterwards, and he getting job in that own native district only. Means every the person, the friends are selecting that rich and the famous districts which are earn the money, but he was not concentrated that the money, earn the money, but he do the services, motivation of services.
So finally he got the job selected as a collector to his own district and do the services and with his parents. But here the one is the important thing that he was started here when the reached the district as a collector, and he meet the people and in a conference, and he give assurance to I can develop this district within short period, and you can be you don't worry about the your struggles, and then afterwards and at the same time you can be solve the one by one the problems which are need required in that district. As a first work project is established new one of the highway, that one is a bridge in the between of his village and that town, in between that 8 kilometers distance. So here one of the lake will be flow away, but that is the very trouble and to reach the people to the town. So he is doing the first project in his as a collector. So is completed. Then afterwards he established the more activities as a school, establishing the schools, hospitals, and next the needed and all activities. And he everybody appreciating his services. He also the feel happy with his parents and his own family. So what we are getting here, the moral of this story means the author's ambition as gives us what one you should do hard work in a life. The most of the struggles are there, and but you are not fear, and you are make a you are rich, you are highly your ambitions. Ambitions and a goal. You should do hard work. You should be reach the goal, and afterwards you can get the success. Feel happy in life. Okay, this is the, and I hope you will be follow this very interesting story, and you should be implement this moral in your life period too, and you get the success like Ravinder's life period. Okay, thank you very much.